Hello, welcome to Graduate Guru. We are starting with a new session of the chapter Elementary Probability Theory. So here in this session, we'll be seeing questions based on probability but which are related to the concept of permutation. And might be, if possible, we might also see sums based on combination part. So over here, first question of this session, question number 7. I'll read the question. 6 persons, including a couple, are to be seated for a photograph in a row. Find the probability of a photograph in which the couple is sitting together. Now, I'll say 6 persons, including a couple. So, मैं ऐसा बोलूँगा. There are 6 persons including a couple. Now find the probability of a photograph in which couple is sitting together. So since we want couple together, so I'll say consider the couple as one unit. So we are left with remaining 4 persons. So a total of 1 plus 4, that is equal to what? 5. So this can be done in 5 ways. And the couple can be arranged among themselves in 2 ways. So therefore, total number of ways is equal to, this will be 5p5 into 2p2. When it is 5p5, we say it is 5 factorial, 2p2, it is 2 factorial. 5 factorial is 120, क्योंकि 5 into 4 into 3 into 2 into 1 करना है, so we get the answer as 120, and 2 factorial is 2 into 1, which is same as 2. So we say it is 240 हो जाएगा. And यहाँ पे मैं ऐसा बोलूँगा, since there are 6 persons including a couple, so मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे ही this can be arranged. So यहाँ पे for total number of possibilities, we say this can be done in what? 6p 6 ways. तो ये हो जाएगा 6 factorial, that is equal to क्या आएगा? 720. तो ये जो है this becomes my n of s का value, and ये जो है this becomes what? My n of a का value. So यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ it is p of a is equal to n of a upon n of s. तो ये हो जाएगा 240 upon 720, and we say the answer for this is 1/3. ठीक है, with this question number 7 is done. Now we start with the next question, that is question number 8. So over here, question number 8 is, I'll read the question. It is, if the letters of the word Tuesday be arranged at random, what is the probability that the arrangement first begins with T, second begins with T and ends with U? So यहाँ पे we need to understand, since मैंने बोला in this session we'll be seeing majority of the questions which will be based on what? Permutation. Permutation का sums को identify करने के लिए the most important condition over here is कि arrangement ये word रहेगा, या फिर मैं बोलूँगा the things in which the order is not important, then it is question which is related to what? Permutation. And अगर वो question combination based रहेगा तो the word used will be selection हो सकता है, कमिटी वर्ड यूज करेंगे, तो ऐसे टाइप के, या फिर मैं बोलूंगा जिसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे टाइप के कंडीशंस रहेंगे, देन इट इज क्वेश्चन रिलेटेड टू व्हाट? कॉम्बिनेशन.
अरेंजमेंट ये वर्ड आया या ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, वी से इट इज परम्यूटेशन, सिलेक्शन कमिटी या फिर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, वी से इट इज कॉम्बिनेशन। तो ये दो बेसिक कंडीशन, बेसिक डिफरेंस है जो हमें याद रखना है। सो यहाँ पे इसमें आई विल से इन द वर्ड ट्यूसडे। अच्छा, जब मैं ये वर्ड देखता हूँ ट्यूसडे, कह रहे से मेरे सारे के सारे लेटर्स जो है वो डिस्टिंक्ट है, मतलब सारे अलग अलग लेटर्स है, ऐसा नहीं है कि कोई भी लेटर रिपीट हो रहा है। सो आई से ऑल द लेटर्स ऑफ दिस वर्ड ट्यूसडे आर डिस्टिंक्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये हो गया ट्यूसडे। तो इन द वर्ड ट्यूसडे देयर आर, अच्छा तो 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स। This can be arranged among themselves in 7p 7 ways. So मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ n of s is equal to 7 factorial which is equal to, ये हो जाएगा 5040। अब मैं ऐसा बोलूंगा, मेरा फर्स्ट केस है let a be an event of getting letter begins with, arrangement begins with, I'll say of getting, arrangement begins with T। सो मैं ऐसा बोलूंगा, नाउ सिंस आई वांट T से वो अरेंजमेंट स्टार्ट होना चाहिए, मतलब कह रहे से द फर्स्ट पोजीशन is for the letter T. This can be done in 1p 1 way. So the remaining letters, I'll say, so the remaining, कितने लेटर्स बचेंगे, T निकल गया तो बचे हुए 6, so the remaining 6 letters can be arranged among themselves in 6p 6 ways। सो मैं ये लिखूंगा, ये जो n of a हो जाएगा, दिस बिकम्स 6p6 इंटू 1p1, ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 720। एंड इधर मैं लिख दूंगा p of a इज इक्वल टू n of a अपॉन n of s। आई कैन ऑल्सो से इट इज 6 फैक्टोरियल हो जाएगा अपॉन 7 फैक्टोरियल। अगर मैं देखता हूँ 6 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, ये और ये कैंसिल हो गया, दिस इज 1/7। ठीक है, अगर मैंने ये वैल्यू नहीं लिखा होता तो भी चल जाता, क्योंकि मैं डायरेक्टली यही जो टर्म्स है उसी को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, या फिर ये वैल्यू लिखा होता तो 0 0 कट करके फिर 72 वंस एंड उसको कैंसिल करके अगेन वी वुड हैव गॉट द सेम आंसर। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट हो गया है। नाउ विल मेक अ नोट ऑफ दिस पार्ट। ओवर हियर ये 1/7 जो है ये 8 के फर्स्ट पार्ट का आंसर है, तो विल कंटिन्यू द क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ओवर हियर। सो यहाँ पे सेकंड पार्ट में आई विल से सेकंड पार्ट वाज बिगिंस विथ T एंड एंड्स विथ U। सो मैं यहाँ पे लिखता हूं इट इज
be an event that the arrangement begins with T and ends with U. So I'll say the first and the last position is reserved for the letters T and what? U. So this can be done in 1p1 to what? 1p1 ways. And the remaining, अच्छा अभी T और U को अगर हम छोड़ दे, सो यहाँ पे ये T एंड U को छोड़ दिया तो अभी 1 2 3 4 5 तो बचे हुए 5 है. सो आई से एट द रिमेनिंग व्हाट 5 लेटर्स कैन बी अरेंज among themselves in 5p5 ways. So therefore मैं लिखूंगा n of b will be equal to 1p1 into 1p1 into 5p5. तो ये हो जाएगा 1 factorial into 1 factorial into 5 factorial. ये हो जाएगा 1 into 1 into I can say 5 factorial which is equal to क्या आएगा 5 factorial. So अब मैं यहाँ पे लिखूंगा p of b is equal to n of b upon n of s. So ये हो जाएगा 5 factorial upon 7 factorial का वैल्यू निकाला था बट मैं यहाँ पे खाली 7 factorial यूज कर रहा हूँ. सो यहाँ पे इट इज 5 factorial एंड ये है 7 तो 7 factorial को भी राइट इट एज 7 into 6 into क्या आ जाएगा 5 factorial. तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा. सो दिस बिकम्स 1 by क्या आएगा 42. सो विद दिस क्वेश्चन इज डन. we'll make a note of this part. Now we start with the next question, that is question number 9. If the letters of the word mother are arranged randomly, what is the probability that the words will begin with the letter R, ends with the letter O, begin with letter O and ends with the letter R? So यहाँ पे I'll say this is question number 9. तो मैं यहाँ पे मैं बोलता हूँ in the word mother there are 1 2 3 4 5 6. तो मैं बोलूँगा 6 letters. So the total number of arrangement can be 6p6. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अरेंजमेंट इज इक्वल टू 6p6 एंड दैट इज इक्वल टू क्या लिखूंगा सीधा 6 फैक्टोरियल आ जाएगा. सो वी से दिस इज नथिंग बट व्हाट वैल्यू ऑफ n ऑफ s. ठीक है ये हो गया. अब यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन है बिगिन विथ द लेटर r. सो यहाँ पे let A be an event that the word begin with letter R. ये बोला गया. Now since the word begin with letter R, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा the first position
the first position will be occupied. तो मैं बोलूंगा the first position will be occupied by the letter R in 1P one way and the remaining letters are phi and this can be arranged among themselves in phi p phi ways. So इसके बाद मैं लिखूंगा n of a is equal to 1p1 into phi p phi. And this becomes 1 factorial into 5 factorial. 1 factorial is 1. ये हो जाएगा 5 factorial. So my answer for this part is 5 factorial. So this becomes p of a is equal to n of a upon n of s. ये हो जाएगा 5 factorial upon 6 factorial. So अब 5 और 6 में ये बड़ा नंबर है. So we change this term. तो ये हो जाएगा 5 factorial upon 6 into 5 factorial. तो ये और ये part cancel हो गया. We get 1 by 6 as the answer. First part is done. Now we start with the second part. Second part says, let B be an event that it ends with the letter O बोला है. So over here I'll write, see ends बोला है. ends मतलब last letter, मतलब last position बोलूंगा. तो मैं ऐसा लिखूंगा, the last position will be occupied by the letter O in 1p1 way and the remaining 5 letters are the remaining 5 letters लिख दिया. I'll say and the remaining letters are 5 लिखूंगा. ठीक है, remaining letters are what? 5 and this can be arranged among themselves in 5p5 ways. So अब मैं लिखूंगा यहाँ पे n of b is equal to 1p1 into 5p5. So ये हो जाएगा 1 factorial into 5 factorial and ये हो जाएगा 5 factorial. So अब यहाँ पे लिखेंगे p of b is equal to n of b upon n of s. ये हो जाएगा 5 factorial, ये हो जाएगा 6 factorial. ये हो जाएगा 5 factorial, ये हो जाएगा 6 into 5 factorial. ये और ये cancel, we get 1 by 6 as the answer. ये हो गया second part. Now we start with the last part, that is the third part. And third part के लिए condition दिया गया है, letter begins with the letter O and ends with the letter R. तो मैं ऐसा लिखता हूं, let C be an event that the word begins with O and ends with R. So यहाँ पे मैं लिखता हूं, the first position will be occupied by the letter O and
the last position will be occupied by the letter R in 1p1 into 1p1 ways, and we are left with remaining 4 letters. So this can be arranged among themselves in 4p4 ways. So मैं यहाँ पे लिख दूंगा it is n of c आ जाएगा which is 1p1 आ गया into 1p1 आ गया into 4p4 आ गया. So this is 1 factorial and what 4 factorial. So answer for this part will be 4 factorial. And यहाँ पे लिखेंगे p of c is equal to n of c upon n of s. ये हो जाएगा 4 factorial upon 6 factorial. So यहाँ पे इसका continuation यहाँ पे ही होगा, that is equal to ये हो जाएगा 4 factorial, ये हो जाएगा 6 into 5 into 4 factorial. ये और ये cancel हो गया, we get 1 upon 30, and this is nothing but what p of c का value. So with this question is done. We'll make a note of this question. We start with the next question, that is question number 10. If the letters of the word father be arranged at random, what is the chance that the two letters A and R will be at extremes? So यहाँ पे in the word father, there are 6 letters आ जाएगा. So n of s के लिए my condition becomes, since ये father word है, these are 6 letters है, सारे के सारे जो letters है ये distinct है, so this can be arranged among themselves in what, तो मैं बोलूँगा 6p6 ways. So यहाँ पे in the word father there are 6 letters. So इसके बाद मैं लिखूंगा total number of possibilities is equal to 6p6, and इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा it is 6 factorial. ठीक है, तो ये हो गया n of s का वैल्यू. अब यहाँ पे कंडीशन दिया गया है, let A be an event that the two letters A and R be at the extreme position
सो अब जब ये सिचुएशन आएगा तो मैं ऐसा बोलूंगा, द फर्स्ट एंड द लास्ट position will be occupied by the letter A and R, but these letters can be arranged among themselves, लिखूंगा, in 2p 2 ways, and the remaining letters, तो मैं बोलूंगा in the remaining 4 letters can be arranged among themselves in 4p 4 ways आ जाएगा. सो ये कंडीशन हो गया. तो यहां पे मैं लिख सकता हूं दिस इज n ऑफ a इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2p2 इंटू 4p4 एंड ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल. तो यहां पे मैं लिखता हूं p ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ a अपॉन n ऑफ s. सो दिस बिकम्स 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल एंड ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल. ये हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल विल रिमेन एज इट इज. ये हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल. तो ये और ये कैंसिल हो गया. दिस इज 1 जा एंड ये हो जाएगा 3 जा. तो ये हो जाएगा 1/50. With this question is done. We'll make a note of this question. Question number 11. 5 boys and 6 girls are to be seated in a row at random. Find the probability of the arrangement in which no 2 boys are sitting together. So यहाँ पे मैं ऐसा बोलूंगा, this is question number 11. There are 5 boys and 6 girls. So, a total of 5 plus 6, that is equal to 11 persons. This can be arranged among themselves in 11p 11 ways. So यहाँ पे मैं लिख दूंगा n of s is equal to 11p 11 which is equal to 11 factorial आ जाएगा. तो यहाँ पे लिख दिया as what 11 factorial. ठीक है. अब फर्स्ट यहाँ पे कंडीशन है कि find the probability of an arrangement in which no 2 boys are sitting together. तो मैं ऐसा बोलूंगा, पहले तो लिखते हैं let a be an event that no 2 boys are sitting together. Now since जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन होता है जहां पे no 2 boys are sitting together, मतलब मेरे को बॉयज साथ में नहीं चाहिए, तो जब बॉयज साथ में नहीं चाहिए तो हम पहले प्लेसिंग करेंगे ऑफ व्हाट गर्ल्स, एंड गर्ल्स के आजू बाजू
हम बॉयज को बैठाएंगे तो कोई भी दो बॉयज साथ में नहीं होगा. सो आई से no two boys are together, so we say we placed girls first. तो मैं यहां पे ऐसा लिखता हूं, since we want no two boys together, we placed 6 girls first, and besides those 6 girls, there are 7 places. There are 7 places, and 5 boys are there. So this can be done in, सबसे पहले तो आ जाएगा 6p6. अच्छा, ये 6p6 क्यों आ, तो यहां पे मैं पहले ना ये अरेंजमेंट बता देता हूं. ये है गर्ल्स को पहले प्लेस्ड किया, सो यहां पे गर्ल्स है. अब ये गर्ल्स के आसपास अगर बॉयज को प्लेस्ड किया, सो आई हैव 1 2 3 4 5 6 7. या फिर मैं ऐसा बोलूंगा कि इसको मैं अलग कलर से मार्क करता हूं. ये जो है सो ये देखो, ये गर्ल्स के आसपास मैं बोलूंगा 1 2 3 4 5 6, इसके आसपास मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 7 पोजीशंस है. एंड ये 7 पोजीशंस में मुझे कितने बॉयज, क्या बोला है, नो टू बॉयज आर टुगेदर. सो इसके आसपास में अगर ये यहां पे अगर बॉयज को बिठा दिया, सो मेरे पास कितने बॉयज, कितने पोजीशंस है, 7. एंड मेरे पास कितने बॉयज है, 5. सो दिस कैन बी डन इन, क्या आएगा, 7p5 वेज. एंड दूसरा ये चीज मैं बोलूंगा कि ये जो मैंने गर्ल्स को प्लेस्ड किया है, ये गर्ल्स, ये जो गर्ल्स है ये 6 है. एंड कहने से ये गर्ल्स अंदर ही अंदर उनके पोजीशन चेंज कर सकते हैं. सो आई से देयर आर 6 प्लेसेस फॉर गर्ल्स एंड देयर आर 6 गर्ल्स. सो दिस कैन बी अरेंज इन व्हाट, 6p6 वेज. इसलिए यहां पे लिखा है 6p6. एंड देयर आर, मैं बोलूंगा 7 पोजीशंस फॉर बॉयज, एंड वो 7 पोजीशन के लिए मेरे पास सिर्फ 5 बॉयज है. सो दिस कैन बी अरेंज अमॉन्ग देमसेल्व्स इन व्हाट, 7p5 वेज. सो यहां पे इसके बाद मैं लिखूंगा इसके लिए, दैट इज इवेंट के लिए, n ऑफ a इज इक्वल टू 6p6 इंटू 7p5. ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3. सो इसको तो मैं ऐसे ही लिखूंगा, एंड आई विल राइट दिस वैल्यू आल्सो एज इट इज. एंड फिर मैं लिखता हूं यहां पे p ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ a अपॉन n ऑफ s. एंड इसको मैं लिख दूंगा एज 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल. पहले तो यही लिखेंगे, दिस इज 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 6 फैक्टोरियल. एंड इसको मैं लिखूंगा 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल. तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये 7 और 7 भी कैंसिल हो जाएगा. सो यहां पे इफ यू सी, तो मैं ऐसा बोलूंगा 5 4 जा, ये हो जाएगा 20, एंड 20 इंटू ये हो गया, अभी ये देखो 5 1 जा, ये 5 2 जा, 2 1 जा, और ये हो जाएगा 2 2 जा.
अब ये टर्म आ गया, अब मैं बोलूंगा 3 1 जा 3 3 जा 3 1 जा 3 2 जा, ये हो जाएगा 2 1 जा, ये हो जाएगा 2 4 जा 2 1 जा 2 2 जा। अब देख रहे हैं तो न्यूमरेटर के सारे टर्म्स कैंसिल हो गए, तो न्यूमरेटर में क्या बचा, तो मैं बोलूंगा 1। अच्छा डिनोमिनेटर में मैं देख रहा हूं यहाँ पे 2 बच रहा है और ये 11 बच रहा है, तो ये हो जाएगा 22। सो यहाँ पे इट इज 1 बाई क्या आएगा 22। विद दिस क्वेश्चन इज डन एंड नाउ वी हैव सीन इनफ क्वेश्चंस व्हिच वर बेस्ड ऑन व्हाट permutation part in this session, so we also end this session over here. Thank you.